Hello friends, welcome to my channel BioCafe. Today we are going to discuss about a new topic and the topic is from your population ecology. The name of the topic is population dispersion. This topic will be useful for those who are preparing for the CSIR NET examination, GATE Life Sciences, BSc as well as MSc courses. So let us begin. Before going to start with the topic, one must understand that what is a population. A population is nothing but the sum of all the organisms of the same group or species which live in a particular geographical area, and those who are capable of interbreeding, this will make your population. So what is population? It is nothing but a kind of all the organisms which are present. These organisms can be of the same group, that is of the same species also, and they can be of different species also, but they are living in a particular geographical area and they are able to interbreed among themselves. So what is the meaning of interbreed? Interbreed means they are able to reproduce among themselves. I hope the definition is now clear. Next is, when we are discussing about population ecology, so we must understand that what is population ecology refers to. So population ecology is nothing but a study. What it is the study of how various factors affect the population growth, rates of survival and reproduction, and you can say the risk of extinction. So what sort of factors are affecting the characters such as your population growth, then rates of your survival and reproduction, and as well as what the risk of extinction. So all these characters which are there and which factors are affecting these characters, these are all studied in the population ecology. Now before going to start with our main topic, that is population dispersion, so we should understand that what are the characteristics of population, and you might be aware that population dispersion is nothing but a kind of one of the characteristics of population only. So here we are going to list out some of the characteristics, out of which we are going to discuss about only population dispersion in today's video. So population size and population density, it refers to the number of individuals or the number of species which are present at a particular time and at a particular area. So that is your population size and population density. Then second is your population dispersion. We will not talk for this right now because the entire video is for population dispersion only. Then third is your age structure. Age structure refers to means in a population how many individuals are old, how many individuals are young, and how many are undergoing the process of death. So all these is referring to the age structure, that in a population how many individuals are there. For example, how many of them are old, how many of them are young. So this will define the population and it is one of the characteristic of the population. Then population growth. So how the population growth is playing an important role. That means in a population some of the individuals or some of the species will come into a particular population and some of the species will leave that population. So this is how the growth will matter when the population is concerned. Then natality. Natality refers to the birth rate, that how many individuals are taking birth at a particular time period, right? So that is referred to as natality. Then mortality. Mortality means it is referring to the death rate, that how many individuals are undergoing the process of death at a given time. So that is your mortality. So these 6 are the major and important characteristic features of a population, out of which we are going to discuss about population dispersion today. So let us begin. Population dispersion. So before going to start, we have to understand what is dispersion. Dispersion is nothing but a kind of splitting, right? Splitting, or I can say spreading in simple terms if we talk about, but here we have to go it in the detailed form. Dispersion or distribution patterns show the spatial relationship between the members of a population within a habitat, right? So यहाँ पे ये लोग बात क्या कहना चाह रहे हैं कि that is the whatever the dispersion is there or distribution I can say, or the pattern which is there, it is related to the spatial relationship. Spatial means related to the area. यहाँ पे area की बात चल रही है, right? So it is related to the area. So it shows the spatial relationship between the members of a population within a particular habitat.
अब इसका सिंपल इतना मीनिंग यही है कि एक पर्टिकुलर हैबिटेट में यानी कि एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन में उस स्पीशीज़ का अकेरेंस कितना है या फिर कितने फ्रिक्वेंटली वो अकर हो रहा है या कौन से अलग अलग स्पीशीज़ उस जोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं, दैट इज़ नथिंग बट अ काइंड ऑफ डिस्पर्जन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज़ रिफर्स टू इन दैट पर्टिकुलर एरिया. So what is dispersion or distribution pattern? It is nothing but a kind of relationship which is there among the members of the species and whatever the geographical area is there, उन दोनों के बीच में ये जो है स्पेशल रिलेशनशिप जो है वो किसके थ्रू शो होती है, विथ योर डिस्पर्जन और आई कैन से डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न. राइट, अगर सी एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल गिर जो फॉरेस्ट है, राइट, तो देयर यू कैन सी द एशियाटिक लायंस आर रिसाइडिंग. तो एशियाटिक लायंस वहाँ पे पाए जा रहे हैं. सो दैट इज़ व्हाट इज़ द area where you can find that the Asiatic lions are found. So this is what the distribution of the Asiatic lion is there in terms of the गिर forest. अब गिर forest उनका habitat हो गया और एशियाटिक लायन वहाँ की species यानी कि वहाँ के members हो गए. और अगर हम बात कर रहे हैं dispersion and distribution pattern की, तो ऑब्वियस है कि उनका जो स्प्रेडिंग है या फिर उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर्टिकुलर एरिया को, उसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन डिस्पर्जन. देन दिस पॉपुलेशन डिस्पर्जन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो मैटर करती है, दैट वी आर गोइंग टू सी. इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन वन ऑफ द थ्री बेसिक पैटर्न्स. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के जो टाइप्स है वो कितने हैं, 3 है. देर आर 3 टाइप्स और देर आर 3 पैटर्न्स ऑफ डिस्पर्जन. फर्स्ट इज़ योर यूनिफॉर्म डिस्पर्जन, सेकेंड इज़ योर रैंडम डिस्पर्जन एंड थर्ड इज़ योर क्लम्प्ड डिस्पर्जन. तो कितने तरह के हैं, देर आर 3 टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन. फर्स्ट इज़ योर यूनिफॉर्म, सेकेंड द रैंडम एंड थर्ड इज़ योर क्लम्प्ड. तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू सी फॉर देम इन डिटेल नाउ विद एग्जाम्पल्स. सो द फिगर यू कैन सी दैट कि देखो आपको ये जो क्रॉस है उनको एक स्पीशीज़ मान के चलना है, राइट. तो यू कैन सी दैट यूनिफॉर्मिटी इज़ देयर कि ऊपर 3 फिर इक्वल डिस्टेंस पे भी मेंटेन है और यूनिफॉर्मली अरेंज्ड है. सो सच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और सच टाइप ऑफ डिस्पर्जन ऑफ अ स्पीशीज इज नोन एज योर यूनिफॉर्म डिस्पर्जन. सो लेट अस बिगिन. यूनिफॉर्म डिस्पर्जन और आई कैन से इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रेगुलर डिस्पर्जन. इसको रेगुलर डिस्पर्जन भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो इन फिगर में ही कि हाउ द स्पीशीज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड दे आर हैविंग द इक्वल डिस्टेंसेस. कि उन दोनों के बीच की जो स्पेस है वो आप देख सकोगे कि दे आर हैविंग द इक्वल डिस्टेंसेस. सो लेट अस स्टार्ट. नाउ इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इंडिविजुअल्स आर इक्वली स्पेस्ड अपार्ट. देखो ये एक स्पीशीज़ है, ये एक स्पीशीज़ है, एक स्पीशीज़. देर आर 3 स्पीशीज़ इन द फर्स्ट लाइन और तीनों कैसे है, इक्वली अपार्ट, जो मतलब इक्वली स्पेस्ड है. इक्वली स्पेस्ड का मतलब है कि उन दोनों के बीच में इक्वल गैप्स है, राइट. आप फर्स्ट और सेकंड के बीच में भी देख सकते हो. यू कैन सी इन द सेकंड एंड थर्ड ऑल्सो, राइट. सो इन द सेम वे द यूनिफॉर्मिटी इज देयर अमंग द स्पीशीज पॉपुलेशन. So such type of distribution or dispersion is called as your uniform dispersion or I can say regular dispersion, and it is seen in those plants who are showing negative allelopathy. अब नेगेटिव एलिलोपैथी का मतलब है कि एक तरह का ऐसा फिनोमिनन होता है जिसमें देख सकोगे कि प्लांट्स क्या करते हैं, दे विल रिलीज सम ऑफ द केमिकल्स एंड दिस केमिकल्स आर योर टॉक्सिन्स. अब इसके वजह से क्या होगा कि जो आजू बाजू की स्पीशीज है दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव. तो जहाँ जहाँ ये प्लांट होंगे वहाँ वहाँ दे आर गोइंग टू रिलीज दिस टॉक्सिन्स एंड दिस टॉक्सिन्स इन टर्न आर गोइंग टू किल द सराउंडिंग प्लांट्स. तो उतने एरिया में वो प्लांट दिखेगा ही नहीं. अगर मान लो ये सारे प्लांट्स हमारे पास है तो यू कैन सी दैट इन अ पर्टिकुलर रेंज वहाँ पे वो प्लांट दिखेगा नहीं, तो आपको यूनिफॉर्मिटी जो है वो देखने मिल सकती है. सो दैट इज़ वाई दैट इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस, राइट. एंड वो जो प्लांट है उनका नाम क्या है, सेजेस, राइट. व्हाट दे आर कॉल्ड एज सेजेस. So in a uniform distribution, the individuals are equally spaced apart as seen in negative allelopathy, where you can see that the plants surrounding the sages वो मर जाते हैं due to the chemicals which are released by your sages plant. Here you can see that the repulsive forces are more than the attractive forces. देखो अब हमें ये जो 2 टर्म्स हैं उनको पूरे जो डिस्पर्जन टॉपिक है इसमें लेके ही चलना है.
you have to consider two forces. First is your repulsive force and second is your attractive force. So repulsive force का मतलब है कि किसी को दूर भेजना अपने से, right? To repel someone. तो इसी तरह से when something is getting repelled with the help of a force, and that force is your repulsive force. In the same way when we are having attractive force, तो कुछ ना कुछ चीज़ें वो अट्रैक्ट करेगी, राइट? अगर सपोज मान लो कि इसको एक एग्जांपल देते हैं, एक शुगर क्यूब मैंने रख दिया है, राइट? एक शुगर क्यूब एक जगह पे रख दिया है, तो वहाँ पे एक्यूमुलेशन होगा अभी किसका? चींटियों का. दैट मीन्स एक्यूमुलेशन ऑफ एंट्स विल टेक प्लेस. सो दिस इज़ व्हाट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स रिफर्स टू. और उसी वे में अगर मान लो कि मैंने कॉकरोच मारने की जो दवा है या फिर एक कोई टैबलेट रख दी है, तो नन ऑफ द कॉकरोच इज गोइंग टू कम ओवर दैट प्लेस. दैट इज़ योर रिपल्सिव फोर्स. तो आर यू गेटिंग दिस? रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्टिव फोर्स. तो जहाँ पर आप देखोगे कि रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा देखने मिलेगा एज कंपेयर टू अट्रैक्टिव फोर्स, देयर यू कैन सी दैट यूनिफॉर्मिटी इज गोइंग टू बी मेंटेन्ड, राइट? तो उनके आजू बाजू वाले एरिया में वो स्पीशीज आपको देखने नहीं मिलेगी, तो एक यूनिफॉर्मिटी यानी कि एक डिस्टेंस मेंटेन रहेगा. वाई? बिकॉज द रिपल्सिव फोर्सेज आर मोर एज कंपेयर टू योर अट्रैक्टिव फोर्सेज. देन सेकेंड, द एग्जाम्पल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ देयर, इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन प्लांट species that inhibit the growth of nearby individuals. तो ऐसे प्लांट्स में देखा गया है जो कि अपने नियर बाई इंडिविजुअल्स के जो प्लांट है उनके ग्रोथ को अफेक्ट या इनहिबिट कर देते हैं. एंड दैट इज़ व्हाट योर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो आपको चीज़ें हैं वो देखने मिलती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल हियर व्हाट दे हैव गिवन इज द सेज प्लांट विच इज़ देयर. और उसका साइंटिफिक नेम क्या है? साल्विया ल्यूकोफाइला. सो दिस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लांट. सो इट सिक्रीट्स टॉक्सिन्स, एंड ये फिनोमिनन जो सिक्रीट करने का है टॉक्सिन, उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव एलिलोपैथी. एलिलोपैथी refers to a phenomenon where you can see that certain chemicals which are referred to as toxins, they are released, and due to which you can see that the nearby individuals are going to be killed. और nearby kill हो गए हैं तो अब वो वहाँ पे उनका आना जाना या फिर वो होंगे ही नहीं. देयरफॉर अ काइंड ऑफ डिस्टेंस और स्पेस इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड. नाउ द केमिकल्स विच आर देयर, दे आर गोइंग टू किल ऑफ सराउंडिंग प्लांट्स इन अ सर्कल अराउंड द इंडिविजुअल सेज प्लांट्स, राइट? तो अभी इंडिविजुअल सेज प्लांट क्या करने वाले हैं? केमिकल्स रिलीज करने वाले हैं, एंड दे आर गोइंग टू किल द सराउंडिंग ऑफ प्लांट्स, leading to a uniform distance between sage plant. और आई कैन से each plant के बीच में यूनिफॉर्म डिस्टेंस जो है वो मेंटेन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ, एंड देयर यू कैन सी दैट यूनिफॉर्मिटी इज सीन. आई होप कि यूनिफॉर्म डिस्पर्जन या फिर रेगुलर डिस्पर्जन है वो आपका क्लियर हो गया होगा, राइट? एंड इट इज़ ऑल्सो सीन इन एनिमल्स दैट मेंटेन डिफाइंड टेरिटरीज. तो ऐसे एनिमल्स में भी देखने मिलता है जहाँ पे आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर डिफाइंड टेरिटरीज है. जैसे यू कैन हैव दिस एग्जांपल जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है फॉर योर पेंगुइन्स, राइट? नेस्टिंग पेंगुइन्स जो है इनमें भी ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो देखने मिलता है. एंड दिस एग्जाम्पल यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि पेंगुइन जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहे हैं. एंड कौन सा प्लांट है? That is your Salvia leucophylla. That these two species are going to show the uniform pattern of distribution. Now this is the second type of distribution or dispersion pattern I can say. तो आप देख सकते हो कि एक species कहाँ है, एक species अलग अलग, means there is no fixed position of a particular species. तो कहीं पे भी अलग अलग species जो है वो randomly आप देख सकते हो spread हो चुकी है. So such type of distribution or dispersion is your random dispersion. What it is? It is your random dispersion. Now let us deal with it. So random dispersion which is there, in a random distribution individuals are spaced at unpredictable distances. अनप्रडिक्टेबल डिस्टेंसेस का मतलब क्या है कि हम मतलब बोल नहीं सकते हैं, राइट? कि अगर मान लो एक आम का पेड़ यहाँ पे लगा है तो हो सकता है एक आम का पेड़ बहुत ज़्यादा दूर के डिस्टेंस के ऊपर मतलब होगा. सो दैट इज़ व्हाट योर रैंडमनेस इज कि एक कहाँ पे पाया जा रहा है, एक कहाँ पे पाया जा रहा है. सो दिस देर इज़ नो यूनिफॉर्मिटी, और आई कैन से देर इज़ नो रेगुलरिटी इज सीन हियर. रैंडमनेस इज देयर, राइट? So this is why they have said that in a random distribution individuals are spread at unpredictable distances. We cannot predict those distances.
right? And they are spaced with the help of the unpredictable distances from each other, as seen in the plants which are having the dispersal of seeds with the help of wind. तो ऐसे प्लांट्स में ये चीज़ें देखने मिलती है जहाँ पे आप देखोगे कि डिस्पर्जन है सीड्स का, इट इज़ हैपनिंग ड्यू टू द विंड्स. अगर देखो सीड का डिस्पर्जल यानी कि सीड का डिस्ट्रीब्यूशन, अब हवा जो है वो कहीं कहीं इन सीड्स को लेके जाएगी और फिर जहाँ जहाँ ये सीड्स गिरेंगे वहाँ वहाँ वो प्लांट्स आपको देखने मिलेंगे. सो नो यूनिफॉर्मिटी और नो रेगुलरिटी इज सीन, देयर फॉर सच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ देयर, इट इज़ कॉल्ड एज योर रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन और आई कैन से रैंडम डिस्पर्जन पैटर्न. आई होप कि आपको ये जो चीज़ है वो क्लियर हो गई होगी. Then here again we have to talk about the forces, that is your attractive forces and repulsive forces are absent. यहाँ पे कोई किसी के ऊपर प्रेशर डाल नहीं रहा है, therefore no attraction no repulsion is there. जिसको जहाँ जैसी जगह मिली और फेवरेबल कंडीशन मिला वो वहाँ पे रहने लग गया. That is what is your random distribution or I can say random pattern of dispersion is referring to as. I hope कि आपको ये अभी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होगी. देन नेक्स्ट जो एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं. सो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन और रैंडम डिस्पर्जन विच इज़ देयर, इट अकर्स इन डैंडेलियन एंड अदर प्लांट्स दैट हैव विंड डिस्पर्स्ड सीड्स. तो ऐसे प्लांट्स में, यानी कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है डैंडेलियन, यू हैव टू रिमेंबर दिस. So here you can see that the mechanism of seed dispersion is taking place through the wind. Therefore अब जहाँ जहाँ विंड वो सीड्स को डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे या डिस्पर्स करवा देंगे वहाँ वहाँ आपको ये प्लांट्स जो है वो देखने मिलेंगे. देर इज़ नो यूनिफॉर्मिटी, वंस अगेन आई एम टेलिंग, देर इज़ नो दिस रेगुलरिटी इज सीन. देयरफॉर द dispersion is called as your random dispersion and there is a lack of attractive forces as well as repulsive forces also. Right, so this is what actually is happening in case of your random distribution. So first हमने देख लिया कौन सा distribution था. First we had seen the uniform distribution where the uniformity was maintained, and second we are coming we had discussed for your random distribution where no uniformity is there. देन थर्ड इज़ योर क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन. आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो स्पीशीज़ है वो जो सर्कल फॉर्म में है वो एक एक साथ क्लम्प में आ गए, यानी कि एक एक्यूमुलेटेड फॉर्म में आ गए. आपको फिगर में दिख रहा होगा, यू कैन सी इन दिस फिगर वेर यू कैन सी दैट द स्पीशीज़ आर अरेंज्ड और आई कैन से दे आर फॉर्मिंग ग्रुप्स. राइट, जैसे कि ह्यूमंस है एक पर्टिकुलर जगह पे रह रहे हैं देयर फॉर, और कुछ एलिफेंट्स आप देख सकते हो कि जहाँ पे पानी ज़्यादा है वहाँ पे वो लोग झुंड बना के रहते हैं. द ग्रुप्स ऑफ animal species as well as groups of plant species where they are there forming their particular population, this is referred to as your clumped distribution or clumped dispersion. Clumped का मतलब होता है गुच्छा, right? So formed or I can say they are forming the groups. और जो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया, दैट रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नोन एज इरेगुलर टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वेर यू कैन नॉट फाइंड कि इतने पर्टिकुलर एरिया में इतनी स्पीशीज जो है वो आपको देखने मिलेगी. सो इट इज़ नॉट फिक्स्ड, सो देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न. बट हियर कम्स योर क्लम्प्ड डिस्पर्जन. क्लम्प्ड ऑलरेडी आपको फिगर से आइडिया आ ही गया होगा कि द स्पीशीज आर अरेंज्ड और दे आर लिविंग इन ग्रुप्स और क्लस्टर्स और इन द क्लम्प्स. Now, in a clumped distribution pattern, you can see the individuals are grouped together as seen among elephants at a watering hole. तो elephants की बात हमने कर ली थी कि elephants are showing this mode of distribution where you can find कि जहाँ पे भी वो water logging है या फिर water bodies है वहाँ पे वो आजू बाजू उनका जो झुंड है और या उनका जो ग्रुप है, you are going to see their group. So that is what is your clumped distribution or dispersion refers to. And now let us talk about again the attractive as well as repulsive forces. तो यहाँ पर आपके अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू योर रिपल्सिव फोर्सेस. वाई? बिकॉज देखो वाटर बॉडी है तो वाटर बॉडी देख के ही सारे एलिफेंट्स वहाँ रहने के लिए प्रेफर करेंगे, राइट? सो दिस इज़ व्हाट अ काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स इज विच इज़ एक्टिंग to live to make that elephants live over that area, right? तो
इसी अट्रैक्टिव फोर्स के वजह से आप देखोगे कि एलिफेंट जो है वहाँ पे रह रहे हैं। अगर मान लो कि वहाँ पे वाटर बॉडी होती नहीं तो एलिफेंट वहाँ पे रहते? नो, वो वहाँ पे नहीं प्रेफर करते रहना, क्योंकि उनके लिए एक नेसेसिटी होती है, राइट। सो देयरफॉर यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स कैसा होता है हमेशा? इट इज़ हायर एज कम्पेयर टू द रिपल्सिव फोर्सेस। सो इसीलिए यू कैन सी दैट द एनिमल्स आर फाउंड और दे आर फॉर्मिंग द ग्रुप्स. Now, the clumped distribution or the dispersion which is there, it is seen in plants that drop their seeds straight to the ground. और ये ऐसे प्लांट्स में भी देखा जाता है जो डायरेक्ट अपनी सीड्स जो है वो कहाँ पे डायरेक्ट डंप कर रहे हैं? ग्राउंड के ऊपर स्ट्रेट, कहीं विंड जो है इसमें रोल प्ले नहीं कर रहा है. सो इन सच केसेस यू कैन फाइंड द क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि आपको देखने मिला होगा कि बहुत सारी सीड्स एक ही जगह पे गिर जा रही है, राइट. सो एक ही जगह पे गिर जाने से वही उनका ग्रोथ होगा, तो इसके वजह से क्या होगा कि वहाँ पे बहुत सारे सेम स्पीशीज़ जो है वो ग्रो होंगे उसी प्लांट के. Therefore, it is referred to as your clumped distribution. For example, oak trees and your animals that live in groups such as schools of fish, or I can say the group of your elephants. तो ये example आपको याद रख लेना है because they are important in terms of your examination. राइट. तो ओक ट्री कौन सा डिस्पर्जन शो कर रहा है? इट इज़ शोइंग योर क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पर्जन. इन द सेम वे एनिमल्स सच एज, जो आपने फिश की भी देखी होगी कि फिश हमेशा झुंड में या ग्रुप में चलते हैं सेम स्पीशीज़ के. सो दैट इज़ योर क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन. एंड सेकेंड इज़ योर हर्ड्स ऑफ एलिफेंट्स. तो एलिफेंट्स भी इसी तरह से ग्रुप में देखने मिलते हैं. देन क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ देयर, इट मे ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम हैबिटेट हेट्रोजेनिटी. राइट. नाउ व्हाट इज़ दिस हैबिटेट हेट्रोजेनिटी? तो हैबिटेट हेट्रोजेनिटी का मतलब क्या होता है? अगर मान लो इफ़ आई एम हैविंग अ पर्टिकुलर हैबिटेट एंड इन दैट हैबिटेट एक जगह ऐसी है जहाँ पे बहुत हरा भरा है, राइट. देर इज़ अ रिच सोर्स ऑफ द रिसोर्सेज विच आर देयर, दे आर प्रेजेंट. एंड एक जगह ऐसी है इट इज़ टोटली ड्राई. तो वेयर यू कैन फाइंड द डाइवर्सिटी? आपको एनिमल या प्लांट्स की डाइवर्सिटी कहाँ ज़्यादा देखने मिलेगी? वेयर द रिसोर्सेज आर रिच. सो दिस इज़ व्हाट कि एक जगह पे आपको ज़्यादा रिसोर्सेज दिख रहे हैं, एक जगह पे कम दिख रहे हैं. सो दिस इज़ व्हाट द हेट्रोजेनिटी इज़ रेफर्ड टू एज. तो जहाँ ज़्यादा हैबिटेट रिसोर्सेज होंगे वहाँ स्पीशीज़ जो है वो अपने आप वहाँ पे अट्रैक्ट होगा और वहाँ पे अपने ग्रुप्स बना के रहेगा. सो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली योर habitat heterogeneity refers to. So if favorable conditions are localized, so organisms will tend to clump around these particular areas. And what are the examples? For example, your lions around a watering hole. तो यहाँ पे लायंस का भी एग्जाम्पल इन लोगों ने दे दिया है कि अगर उनके आजू बाजू अगर अच्छा खासा एरिया रिसोर्स है तो देयर यू आर गोइंग टू find those organisms forming the clump. I hope now the clump distribution is clear. Wherever the resources are good, the animals are found there. और ऐसा ज़रूरी नहीं कि resources, but जो भी उनके attractive force काम कर रहे हैं उसके accordingly they are going to attract over there and they are going to form their group in that particular habitat. Now in this way you can see that the distribution patterns which are there, they are playing an important role and they are giving us the information, right. But यहाँ पर जो बात चल रही है that is for your density and all, so that we are going to deal in the second video where we are going to deal about the population size and density. But here we will be reading it in brief. That is, in this way the dispersion patterns of the individuals within a population provides more information, right. तो अब जैसा जिसका ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर हमें एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एशियाटिक लायंस. सो दैट इज़ गिविंग अस द इन्फॉर्मेशन दैट दिस इज़ द पर्टिकुलर हैबिटेट फॉर एशियाटिक लायंस एंड दिस इज़ व्हाट द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कॉल्ड एज, राइट. तो हमें इनसे इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मिलती है विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, राइट, अबाउट हाउ दे इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड देयर एनवायरमेंट. तो अपने अंदर ही अंदर वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं और अपने एनवायरमेंट के साथ किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं. हाउ कम वी आर नोइंग दैट? वी आर नोइंग दैट विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स, राइट. तो यहाँ पर जो डेंसिटी की बात चल रही है, सो एज कम्पेयर टू द डेंसिटी वी आर एबल टू नो मच मोर थिंग्स फ्रॉम सच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स. Now, just as lower density species might have more difficulty finding a
मेट सी हियर इन क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही है यहाँ पे, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं रैंडम की भी बात है कि अगर मान लो कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है एंड इन दैट पॉपुलेशन यू आर फाइंडिंग दैट कि एक पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो बहुत ही कम है, डेंसिटी मीन्स उसके नंबर बहुत कम है, राइट, उतने एरिया में, तो इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्पीशीज़ टू फाइंड अ मेट. बट क्लम्प में क्या होगा कि बहुत सारे अगर मान लो कि ह्यूमंस एक साथ रह रहे हैं तो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट फॉर द ह्यूमंस टू फाइंड अ मेट, वो आसानी से फाइंड कर जाते हैं. बट अगर ऐसा होता कि एक ह्यूमन यहाँ है और एक ह्यूमन दूसरे कंट्री में है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड द मेट ऑफ द सेम स्पीशीज़. तो वो दिक्कत आ जाती है कहाँ, जब हम लो डेंसिटी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं वहाँ. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पर्जन, तो you can see that it is very easy for them to mate and to carry out the interbreeding. Now we had finished all the three types of distribution, that is uniform distribution, then random distribution, and then third is your clumped distribution. So uniform will have uniformity, random will have randomness, and clumped will have the that is the clusters or the formation of groups. Now in order to calculate the dispersion, we are having certain formula, and that formula is dispersion is calculated as dispersion is symbolically represented as delta, and that is equal to variance upon mean. That is equal to variance upon mean. Variance means क्या होता है कि slight variation जो population में देखने मिल रहा है, that is your variance. And what is mean? Mean मतलब क्या होता है कि आपने statistics में भी पढ़ा होगा, right? कि सम अप कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसको टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं, राइट. सो दैट विल गिव योर मीन, दैट इज़ योर एवरेज वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशीज़. सो वेरिएंस अपॉन मीन विल गिव यू द डिस्पर्जन. अब ये डिस्पर्जन की जो वैल्यू है दैट इज़ डेल्टा, इट इज़ कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ 1. अब 1 को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ जो है हमें ध्यान में रखनी है, एंड इट इज़ the most important part of this particular topic, that is delta. अगर delta 1 होता है तो the species will show your random distribution. अब डेल्टा 1 होगा तो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होगा. अब डेल्टा 1 क्यों है, वाई इट इज़ 1? बिकॉज देर इज़ अ लैक ऑफ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस. तो यहाँ पर आप देखोगे कि देर इज़ नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस, दोनों ही नहीं है, तो रैंडमली जो है वो स्पीशीज़ अलग अलग जगह पे स्प्रेड हो रही है. सो देयर फॉर यू कैन सी दैट व्हेन डेल्टा की वैल्यू अगर करीब करीब 1 आती है या इक्वल टू 1 आती है, सो दिस स्पीशीज़ आर गोइंग टू शो योर रैंडम डिस्पर्जन और आई कैन से डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न. देन व्हेन द डेल्टा वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन 1, अगर डेल्टा वैल्यू ग्रेटर है 1 से, तो द स्पीशीज़ विल शो क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन. क्यों डेल्टा वैल्यू ज़्यादा आएगी? क्योंकि जितना ज़्यादा डिस्पर्जन, यानी कि आप समझ रहे हो कि वो जो क्लम्प है वो वहाँ ज़्यादा बन रहा है, और क्लम्प ज़्यादा बन रहा है इसका मतलब है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा है वहाँ एज़ कम्पेयर टू द रिपल्सिव फोर्सेस. देयरफॉर वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा ग्रेटर दैन 1, एंड व्हेन द डेल्टा इज़ ग्रेटर दैन 1 द स्पीशीज़ विल शो योर clumped distribution, or I can say dispersion. Then when your delta is lower than 1 or less than 1, the species will have your uniform dispersion. अब जब आपके अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत कम है, रिपल्सिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा है, then at that time what will happen, the delta value which is there, it will be less than 1, and when the value of delta is less than 1, at that time the species is going to show योर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रख लेनी है. समटाइम्स दे आर गोइंग टू आस्क कि आपको अलग अलग डायरेक्ट वैल्यूज़ दे दी जाती है, वेरिएंस की वैल्यू दे दी जाती है, मीन की वैल्यू दे दी जाती है एग्जाम में, एंड देन जस्ट यू हैव टू सिंपली डिवाइड एंड यू हैव टू कैलकुलेट कि अगर ये वैल्यू इक्वल टू 1 आती है तो दैट मीन्स द स्पीशीज़ इज शोइंग विच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ शोइंग दिस रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन. एंड देन व्हेन डेल्टा इज़ हैविंग द वैल्यू ग्रेटर दैन 1, अगर एक से ज़्यादा है डेल्टा की वैल्यू, so it is showing clumped type of dispersion, and then when delta is less than 1, the species will show uniform distribution. I hope all the things are now clear. So we had discussed what is population, population ecology, then we have studied in brief the characteristics, which are the 6 most important characteristics of a population, out of which we had discussed about population dispersion, and we had come across that there are 3 types of dispersion, that is uniform dispersion, random dispersion, and your clumped dispersion. And then we had seen that how dispersion can be calculated with the help of this formula,
that is dispersion delta is equal to variance upon mean. Thank you so much, and if you had liked this video, please hit the like button, and if you are having any of the doubts, then you can ask me in the comment box. Do like it, share, subscribe. Thank you.